Guys, today I'm going to unbox the Insta 360 Go Ultra. Let's see what's inside the box. So this is I received. So this is from the Insta 360. So as you know, it's one of the action cameras, and so this box is covered by a thin layer, and there are some codes. I don't know what this scan this in the transparency app. I don't know what is this for. This codes. Okay. So this is the box I got, and let's first time opening it, so I didn't open it. So as you know, this is one of the very latest action cameras on the market, and the beauty of this is it's Go Ultra. So there is Go 3S, and this is the latest version, Go Ultra. Let's see how it is inside the box. Very well packed, very beautiful, very nicely packed. कैमरा है, एक्शन कैमरा, साइज काफ़ी स्मॉल है इसका, एंड फर्दर कुछ चीज़ें हैगी हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग. सो गो अल्ट्रा इज़ द बेसिकली इसका बेनिफिट है कि ये बहुत लाइट वेट है कैमरा. और कैमरा देखने आता है, इसकी कैमरा बहुत लाइट वेट है, लेकिन जेरा टोटल यूनिट है ਉਹਦਾ वेट है. लेकिन अगर सिर्फ कैमरा डिटैचेबल कैमरा है तो कैमरा इस तरह अड हो जाता है. मैगनेटिक है और ये अड हो जाता है मेन यूनिट तो. इस अंदर सानू एक वायर मिलती है जो कि वायर है वायर मिल रही है, प्लस ए नैक बैंड है. इतना इसको नैक च पा लो और इतने कैमरा लगा दो तो वीडियो शूट कर सकते हो इस तरह. मैगनेटिक है तो जस्ट इनू पुल करोगे तो वापस आ जाएगा तेरे हाथ च. और इस अंदर सानू मिलता है एक क्लिप. और इस क्लिप नाल ये भी मैगनेटिक है, इस तरह एकदम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, हैट 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, कैप 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ और इस अंदर बॉक्स के अंदर जो मेन यूनिट है प्लस सानू ये मिलता है कि है देखने ये है कैमरा लॉक करने वास्ते कि भाई तुसी कैमरे दे नाल ही अटैच कर दोगे तो थोड़े वास्ते हैंडी हो जाएगा कैमरा नू कैरी करना. ये इत्थे इस तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੇਨ यूनिट निकालिए पहले. सो ये मेन यूनिट है, ये कैमरे की मेन यूनिट है और इसका साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है. और ये पीछे बैक एंड दी स्क्रीन है. तो देखो की कह रहा है, इतने कह रहे हैं कि जो एक्शन पॉड है, ये एक्शन पॉड है बेसिकली.
और ये वाटर रेजिस्टेंस है, नॉट वाटर प्रूफ, डू नॉट यूज इट अंडर वाटर। तो ये जरा एक्शन पॉड है, इनू असी अंडर वाटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि देख लो इतने सी पोर्ट का भी बनया हुआ है, तो इस करके इस जो अंडर वाटर लेके जाओगे इसनों तो वाटर एंटर कर जाएगा। बाकी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मतलब हाथ च लग रहा है कि हाँ भाई कोई मेटल की चीज़ पकड़ी हुई है, कि ये कोई हाइब्रिड मटेरियल है, प्लास्टिक प्लस और ये इस तरह इस पॉड है एंड एक्शन कैमरा और इस तरह फिट हो जाता है। लेकिन जो इसनों असी बाहर निकालना तो ये बटन है, इसनों प्रेस करांगे तो बाहर आ जाएगा। ये चार्जिंग केबल है, मैं उन्हें सिस्टम ना लगाऊंगा इसनों ताकि ये चार्ज हो सके। बेसिकली यही है द अनबॉक्सिंग। मैंने चार्ज करके ऑन करके देखना। So guys, these are the video shots from Insta 360 Go Ultra, and you can see how clear the picture is and wide angle. Yeah. So it's sunset here, so I'm just capturing the video, and so let's see the sun. So the colors are quite natural and it's capturing nice quality, as compared to other action cameras like GoPro and DJI cameras. I think being so handy and so small, it is doing a very good job, this camera.